Good evening, everyone. Warm welcome to Regulatory Bodies YouTube channel by Testbook. My name is Madhav Sir. I welcome you all in the next session, which we call it as Finance Current Affairs. And this is one of the most important session if you're preparing for RBI Grade B or maybe SEBI Grade A examination or maybe IFSCA examination. This is a must-watch session for everyone. So without any further delay, let's get started with the discussion. But before I start, may I have a reply in the comment section that I'm audible, visible, everything is fine, we are good to go, so that we can start. As you all know, the RBI notification, I would say short notice, has been released, which has very much clarified the number of vacancies, that is 83. शायद आप लोग 38 या 40 वैकेंसीज एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट नाउ इट हैज इंक्रीज टू 83, डबल से भी ज्यादा. और दूसरा, इफ यू टॉक अबाउट द फेज 2 एग्जामिनेशन दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन 6th of December, दैट मींस अगर अभी भी your preparation is not up to the mark, especially for phase 2, and you feel that it won't be possible for you to complete the phase 2 syllabus before phase 1, then it is not even required, क्योंकि अब आपके पास phase 1 के बाद you have almost 48 days which can help you not only to cover at least 2 subjects out of the 3, ESI, finance and management. So 2 can be easily covered in those 40 days and you can easily practice many of the descriptive answer writing part during those days. So guys, give your 100%. This is the right time to begin your discussion. If you're to begin your preparation, if you're still in a dilemma that whether you should prepare for this examination or not, then I would suggest you that is something which is pulling you back, that you won't be able to clear this examination. So I won't suggest you to think in this direction again. I would just say वैकेंसीज का काउंट एप्रोप्रिएट है और उसके साथ साथ टाइम एप्रोप्रिएट है, और अगर आप अभी भी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे, स्टिल यू हैव दैट कैपेसिटी, स्टिल यू हैव दैट कैपेबिलिटी दैट यू कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन. सो बिना किसी देरी के अपनी एग्जामिनेशन को प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लीजिए. ऑब्वियसली गिव मोर देन 100% फॉर current affairs, which is going to help you in all the phases of your examination. What I mean with the term all the phases, not only the current affairs will help you in phase 1 and phase 2, it will help you in your interview part as well. ठीक है जी, समझ आ गया. स्टार्ट करें आज के इस डिस्कशन को. अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो regarding your preparation, then I would say that you are free to type your doubts in the comment section below and I will be taking up each and every doubt of yours. और अगर मुझे लगेगा कि डाउट का काउंट ज्यादा है तो even I will be taking up a special video, or I will be coming up with a specific video where I will be addressing all your doubts, because ये वो टाइम है जहां पर एक एक डाउट दिमाग से हटाना जरूरी है, तभी आप एक डेडिकेटेड मैनर में अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे. इज दिस फाइन गाइस? इज दिस फाइन? आर वी गुड टू गो? शैल वी बिगिन द डिस्कशन? ठीक है जी. कोई भी अगर आपको प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट होगा तो आप प्लीज अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. आई विल बी गोइंग थ्रू विद ईच एंड एवरी कमेंट ऑफ योर्स, और अगर मुझे लगेगा कि एक एक्स्ट्रा या अलग से कोई वीडियो बनाने की जरूरत है, आई विल बी डूइंग दैट एज वेल. ठीक है जी. चल, let's get started with the first part of the day. The first part of our session is we will be discussing the questions based on the previous session, which will be a quick revision for you. And if you want to download the PDF, it will be available on my Telegram channel. Here we go with the first question of the evening from the news was covered in the previous session, so it's a quick revision. With reference to the professional career of R. Gandhi, consider the statements. He has served as the Deputy Governor of RBI from 2014 to 2017. That is absolutely correct. He has handled critical areas like currency management, regulation and digital payments. True, he was on deputation to SEBI for 3 years. True, he has served as Director of the Institute for Development and Research in Banking Technology. True, he was directly involved in the recapitalization of Yes Bank during 2020 crisis. Give me the answer. Was he directly involved in the recapitalization of Yes Bank during the 2020 crisis? No, sir. He was not directly involved, but yes, he was the part of the suggestion making authority. So in that particular context, A option is correct. Fifth statement is wrong. Moving on to the next question. अगला question देखो जरा. With reference to
AUSDP, अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज ऐड कर दूं, लास्ट क्लास में शायद शायद मैंने ऐसा बोल दिया कैपिटल सिटी इज गुवाहाटी। अगर मैंने ये वर्ड यूज किया कैपिटल सिटी इज गुवाहाटी देन आई एम रॉन्ग ऑब्वियसली, बट व्हाट आई बिलीव इज आई हैव यूज्ड अ वर्ड कैपिटल रीजन or maybe I must have used a word capital district. So please go and check. The Dispur is capital city of Assam. That is, there is no doubt. But if you talk about the capital district or capital region, then it won't be Dispur. So please check it so that you can get to know why I have used a word Guwahati in terms of capital region or capital district. ठीक है, सिटी अगर बोला तो pardon me for that. It was obviously a slip of tongue. Moving on to the next news. The project was established. The project will establish Assam State Institute for Urban Development in collaboration with IIT Guwahati. Yes, sir, this is absolutely correct. Governance reforms include GIS-based property tax, tax billing, volumetric वाटर टेरिफ्स, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब आपका जो वॉल्यूम आप यूटिलाइज करेंगे वाटर का, उसके बेसिस पे आपके टेरिफ डिसाइड होंगे। अगला पॉइंट है द प्रोजेक्ट हैज नो फोकस on women's empowerment as it mainly engage in the engineering initiatives. That is correct. No, sir, that is absolutely wrong, because in this initiative, women empowerment is also one of the important segment which is targeted. Women self-help groups will be trained in water operation and internship will be offered to the college age women. That is true. The project's expected outcomes include continuous metered water supply, improved storm water management and climate resilience. That is also correct. So answer is going to be B option. But the third statement which says that there will be no upliftment or empowerment of women, that is wrong. Okay, got it? Moving on to the next point. What does the next point says? Consider the following statement regarding the surveillance and penalties of SEBI's framework. Exchange must conduct a minimum 4 random intraday snapshots of traders position. Is this point correct? Absolutely correct. One snapshot must compulsorily will be between 2:45 to 3:30 p.m. Is this point correct? Absolutely correct. No harm in this. Position value is determined using the index price at the snapshot time. That is also correct कि भैया अगर आपका पोजीशन वैल्यू कैलकुलेट होगा, वो ऐसा नहीं कि आपने किस पे ऑप्शन को ऑप्ट किया था, इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द स्नैपशॉट टाइम। ठीक है जी, उस स्नैपशॉट टाइम में, उस समय में, उस आई वुड से टाइम स्लॉट में क्या प्राइस है इंडेक्स का। ब्रीच ऑफ एक्सपायरी डे लिमिट्स में अट्रैक्ट पेनल्टीज और एडिशनल सर्वेलेंस डिपॉजिट। दैट इज करेक्ट। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस मस्ट सबमिट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर टू सेबी विद इन 30 days ऑफ द सर्कुलर। क्या ये पॉइंट सही है? Is this point correct, guys? Within 30 days of circular, is this point appropriate? या यहाँ पे कुछ changes हैं? Sir, obviously यहाँ पे कुछ changes हैं. It's not 30 days. If we talk about the timeline which has been set in order to come up with standard procedure which is going to be implemented, then it is 15 days. So prepare an SOP for monitoring plus penalty and submit the SOP with SEBI in just 15 days, not 30 days. So answer is going to be A option. 1, 2, 3, 4 are correct. Absolutely correct. Next, consider the following statement regarding global PMI trends. Please pay attention. Global PMI trends की बात हो रही है, इंडिया के PMI trends की बात नहीं हो रही। अगर हम यहाँ पर इन पॉइंट्स को डिकोड करें, तो अगर आप इन पॉइंट्स को डिकोड करते हैं, सो योर फर्स्ट पॉइंट for this, or your first discussion on the same, would be what? So the first one is on 1st September 2025, HSBC has released HSBC India Manufacturing Purchasing Managers Index, and this index has been compiled by S&P Global. If I talk about the value for India, so the value of this index for India is 59.3 for August 2025, which was 59.1, which was 59.1 for July 2025. So keeping that in mind, first statement is correct. On the other side, if I compare it with the rest of the world, अगर आपका PMI 50 से above है, that means you are doing well. But if I talk about the other nations, China's manufacturing PMI is close to the border, that is 50.8, that is correct. US manufacturing PMI की अगर हम बात करें, that is 47.9, और अगर हम बात करें यूरो जोन की,
तो यूरोजोन इज फार बिलो द मार्क ऑफ 50 एंड इट इज 43.7, तो यूरोजोन वाला पॉइंट सही हो गया। यूएस पीएमआई रिमेन बिलो द न्यूट्रल 50 मार्क रिफ्लेक्टिंग कॉन्ट्रैक्शन, ये भी सही है सर। इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ वाज प्राइमरीली एक्सपोर्ट ड्रिवन विद डोमेस्टिक डिमांड बीइंग वीक, नहीं सर, इंडिया का जो ग्रोथ है दैट इज बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक डिमांड, it's because of the domestic demand, and fifth point is wrong, keeping that in mind. So answer should be 1 2 3 4, yes or no? Keeping that in mind, answer should be 1 2 3 4, लेकिन 1 2 3 4 का तो ऑप्शन ही नहीं है। अब अगर 1 2 3 4 का यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो क्या ये फिफ्थ स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या ये फिफ्थ स्टेटमेंट करेक्ट है? सोचो जरा, या मैंने कोई और स्टेटमेंट यहाँ पर गलत मार्क की है, देखना जरा। सो पहली बात तो फिफ्थ स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान से देखो, चाइना's PMI stood at 50.8 indicating contraction. No sir, if your PMI is above 50 it is not contraction. If your PMI is above 50 it is not considered, or it will not be the part of contraction. So it is, if it is above 50 it shows mild expansion. So in that particular case 1 3 and 4 are correct, but second and fifth statement are wrong. समझ आ गया? तो इतने डेप्थ में जाकर अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रीटी वेल। वेरी गुड गौरव, यू हैव आइडेंटिफाइड इट। निहारिका, यू हैव आइडेंटिफाइड इट, गुड, प्रीटी गुड। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following RBI observation or issues led to the penalty imposed on बंधन बैंक? अब बंधन बैंक के ऊपर हाल ही में आरबीआई ने पेनल्टी चार्ज किया ऑफ वैल्यू 44.70 लाख रुपीस। पेमेंट ऑफ कमीशन बेस्ड रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज, yes, this was witnessed. Bank has paid remuneration to certain employees in the form of commission, and commission based remuneration violates RBI guidelines on employee compensation. Clear? Second point, failure to maintain proper audit trails for manual interventions, that is absolutely correct कि सर जो आपकी प्रॉपर ऑडिट ट्रेल्स होनी चाहिए थी उनमें कुछ मैनिपुलेशन है, उसमें मैनुअल इन्वॉल्वमेंट देखा गया, मैनुअली उन्हें कहीं ना कहीं इंपैक्ट किया गया। सो इन दैट पर्टिकुलर केस बी स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। लेंडिंग टू हाई रिस्क सेक्टर विदाउट कोलेटरल रॉन्ग, नॉन कंप्लायंस विद आरबीआई नॉर्म्स नो, कस्टमर कंप्लेंट्स रिगार्डिंग एटीएम फेलियर्स, क्या ऐसा कुछ हमने बात की थी? हैव वी टॉक्ड अबाउट समथिंग लाइक दिस? एनी आइडिया गाइस? एनी आइडिया? नो सर, एटीएम से तो कोई लेना देना नहीं था, लेकिन सर ये जो नॉन कंप्लायंस है ना विद आरबीआई नॉर्म्स ऑन इंटरनल कंट्रोल्स, दैट इज ट्रू। तो आंसर क्या बनेगा सर? ए बी डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, क्लियर हो गया पॉइंट? सो इट इज डी ऑल्सो। डी कहां पे आएगा? अगर आप डी को इन्वॉल्व करेंगे तो नॉन कंप्लायंस विद आरबीआई नॉर्म्स ऑन इंटरनल कंट्रोल्स। So when we talk about these internal controls, it is basically related to the manual intervention, or the audit trail lapses is just because of the issues related to the internal control of the organization. इस वजह से ये पॉइंट को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है जी। सो बी, ए एंड डी आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस सेशन, which of the following statement about sectoral and expenditure components of quarter first of the financial year 2025-26 GDP are correct? Agriculture and allied sector, they have witnessed a growth of 3.7%, that is absolutely correct. Mining sector has witnessed a contraction of 3.1%, absolutely correct. Manufacturing sectors, they have registered a growth of 7.7%, which was 7.6% in the last financial year. So in that context, that is also true. Tertiary sector recorded 9.3% of overall growth, with public administration and defense growth at 9.8%. This point is also correct. Government final consumption expenditure declined by 1.8%. If I talk about the government final consumption expenditure, so government's final consumption expenditure has witnessed a growth, and the growth was 7.4%. Last year there was a decline, and this decline was 1.8% का जो decline था, ये जो 1.8
8% का डिक्लाइन था। दैट वाज इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के फोर्थ क्वार्टर में। और उसके अलावा अगर मैं फर्स्ट क्वार्टर की बात करूं ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 2024-25, it was growth of 0.3%. So E statement is wrong. So according to me, answer is going to be A, B, C, D. That is absolutely correct. ठीक है जी, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? Shall we begin the discussion? If you all are ready and you want me to start with the discussion for today's news, give me yes sir. Guys, if you haven't liked the session yet, I would request you hit the like button. If you haven't shared the session yet, do share it with your friends so that many of the students, they should be aware that yes, the session is live and they can join it to cover their finance current affairs for upcoming RBI Grade B examination. First news I have is related to UPI again. If you remember, in my last to last session, I have helped you to frame a descriptive answer around UPI. I have one more update related to UPI, and the update related to UPI is related to the transaction limits. Now you must be wondering कि sir ये जो transaction limit revision है, why this transaction limit revision is need to be covered? See, I'm not asking you to learn these transaction limits which have been revised. Rather, I want you to understand the logic behind this update and how these updates are going to impact the economy. So keeping in mind that UPI is something which is expected to be asked in the descriptive format. So every area related to UPI should be well covered, should be well analyzed, so that when you write a descriptive answer, you will be in a position to answer it pretty well. So recently, the authority which is responsible for managing, controlling UPI, that is National Payment Corporation of India, has announced that from 15th of September 2025, there will be certain revision in terms of the per transaction limits. So per transaction limits in many cases have increased to 5 लाख रुपीस. ऐसा नहीं है कि पहले कोई ट्रांजेक्शन के लिए 5 लाख की लिमिट नहीं थी. अगर आप IPO के लिए अप्लाई करते हैं, यू कैन मेक अ UPI ट्रांजेक्शन ऑफ 5 लाख रुपीस. इफ यू आर going up with the hospital expenditure or medical expense, then also you can come up with a 5 lakh rupees of per transaction. But it was not obvious for majority categories. But now, person paying to the merchant, there are certain categories for which this limit has been enhanced. जो कि पहले लिमिट 1 लाख या 2 लाख थी, उसे बढ़ाकर अब किया गया 5 लाख. और अगर हम बात करें ओवरऑल 24 hours की लिमिट, for 12 different categories, it has been increased to 10 lakh rupees in a day. So only for P2M, that is person to merchant transactions with verified merchants, can enjoy these benefits. It is not applicable to P2P transaction, which is still the same, that is 1 lakh rupees per day. So if someone asks you what is the person to person limit, so it is 1 lakh rupees, but it has been revised for person to merchant. If I talk about the earlier limits, in most of the categories were 1 to 2 lakh, but now this earlier limit of 1 to 2 lakh has been revised. So this 5 lakh per transaction limit has been set for capital market transactions, insurance transactions, insurance policy purchase, insurance payments, travel expense can be done with a per transaction limit of 5 lakh rupees, government e-marketplace, as well as collection and credit card bills. Similarly, 10 lakh aggregate daily cap has been introduced for all the same categories which have been mentioned above. Very important, जहां से question आना चाहिए, capital market, insurance, travel, government e-marketplace, credit card bills. ये मैंने स्टार मार्क कर दिए जहां से क्वेश्चन RBI पूछेगा, या फिर RBI क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि अगर आप ज्वेलरी खरीदने गए हैं या फिर आप डिजिटल अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं, मतलब आपने एक अकाउंट ओपन किया एंड यू आर ओपनिंग द अकाउंट डिजिटली एंड यू आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन ऑफ योर बैंक अकाउंट, you are transferring the funds from one of your bank account into the newly opened bank account, then in that particular case also the per transaction limit is 2 lakh rupees. तो ज्वेलरी खरीदोगे तो भी UPI की per transaction limit 2 लाख है. अगर आप अकाउंट ओपन कर रहे हो, उसमें पहली बार पैसा डाल रहे हैं अकाउंट में, तो भी आपकी जो per transaction limit है that is 2 lakh rupees. ऐसा क्यों किया गया? Sir, it is basically to support high value digital transactions, to promote wider adoption of UPI for business and investment use cases,
reduce dependency on net banking, RTGS for medium ticket payments. Medium ticket payments means ये 5 लाख से नीचे नीचे वाली payments अगर UPI से निपट जाए, that will be very beneficial for the entire banking sector. तो ये मैंने एक पूरी कहानी आपको दे दी है, जिसको आपको बस एक बार रीड करना, देयर इज नथिंग टू रिमेंबर. याद करना हो तो कैपिटल मार्केट के लिए याद करना, इंश्योरेंस के लिए याद करना, ट्रैवल के लिए, क्रेडिट कार्ड बिल्स के लिए, कलेक्शन अगर आप लोन की बात करते हैं, या बिजनेस टू बिजनेस जब आप फंड कलेक्ट कर रहे हैं उस केस में, ज्वेलरी के केस में, डिजिटल अकाउंट ओपनिंग के केस में, चाहे फिर वो टर्म डिपॉजिट है या फिर आपका इनिशियल फंड है. टर्म डिपॉजिट के केस में ये 5 लाख हो गया जो कि पहले 2 लाख था, और इनिशियल फंड्स अगर आप ओपन कर रहे हैं एक नया अकाउंट, उसमें जो 1 लाख की लिमिट थी दैट हैज बीन इंक्रीज टू 2 लाख. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट P2P जो लिमिट है, P2P जो लिमिट है दैट इज स्टिल द सेम, दैट इज 1 लाख रुपीज. पर डे लिमिट्स को भी रिवाइज किया गया. इफ यू सी दी पर डे रिविजन्स दैट हैज बीन आल्सो मेंशन्ड. अब इनमें सारी रिविजन्स को अगर आप ध्यान से देखें तो मेजॉरिटी 10 लाख है, लेकिन क्रेडिट कार्ड बिल प्लस ज्वेलरी बिल्स अगर आप दे रहे हैं तो उसमें जो लिमिट है दैट इज 6 लाख रुपीज. ये इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा अगर आप फॉरेक्स रिटेल करते हैं थ्रू BPPS दैट इज भारत बिल पेमेंट सिस्टम, वहां पे 5 लाख की लिमिट है. और अगर आप इनिशियली अकाउंट ओपनिंग में पैसा डाल रहे हैं तो वो पूरे डे की भी लिमिट 2 लाख है और पर ट्रांजेक्शन लिमिट भी 2 लाख ही है. सिंपल है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं. एक बार पढ़ लेना, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा तो आप आंसर कर पाओगे फेज 1 में. बट when you will be writing, for sure there will be a question on UPI, and when there will be a question on UPI you can add this update as well. ठीक है जी. अब इसका प्रैक्टिकल इंपैक्ट क्या होगा? सो फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स वी हैव हायर UPI लिमिट्स, सिंप्लीफाई पेमेंट्स फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम्स, म्यूचुअल फंड्स, IPO एप्लीकेशंस as well as capital market transactions. For businesses it will be easy to collect business to business. Business to business का मतलब, मान लो मेरी एक कंपनी है, मैंने रॉ मटेरियल दिया किसी कंपनी को, उस कंपनी ने मुझे जब पे करना, तो बिजनेस टू बिजनेस B2B वो जो कलेक्शन के लिए फंड्स पर ट्रांजेक्शन लिमिट है दैट हैज बीन इनहांस्ड फ्रॉम 2 लाख टू 5 लाख रुपीज, और पर डे लिमिट है 10 लाख रुपए. लार्ज ट्रैवल बुकिंग्स, इंश्योरेंस रिन्यूअल्स, क्रेडिट कार्ड रीपेमेंट्स दैट कैन ऑल्सो बी डन बाय UPI. लेकिन एक पॉइंट, IPO एप्लीकेशन के लिए अभी भी जो आपकी लिमिट है दैट इज द सेम 5 लाख रुपए. उसे बढ़ाया नहीं तो कम भी नहीं किया. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसमें कोई बात है नहीं डिस्कशन के लायक. आई होप रेस्ट ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर. NPCI की बात करें तो इट स्टैंड्स फॉर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. एस्टैब्लिश हुई 2008 में. प्रमोटर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियाज बैंक एसोसिएशन, दोनों ने मिलकर NPCI को सेटअप किया. इट्स एन अपेक्स बॉडी मैनेजिंग द रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम. इट्स प्रोडक्ट्स आर UPI, रुपे, भारत बिल पे, IMPS, फास्टैग, AEPS, आधार enabled payment system, National Automated Clearing House, they all are the products of NPCI. even रुपे, अच्छा हाँ है रुपे, IMPS भी है, UPI भी है. उसके साथ साथ वी हैव फास्टैग्स, सारी चीज़ें हैं. So I guess every point is clear. Managing Director और CEO is दिलीप असबे, हेडक्वार्टर is मुंबई, महाराष्ट्र. उसके अलावा कुछ न्यूज़ थी रिगार्डिंग दी करंट सिनेरियोज ऑफ UPI. आप पढ़ लेना एक बार, मैंने एक रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दे दिया. जो जो मुझे ध्यान आई मैंने हाथों हाथ टाइप करके यहाँ पे आपके लिए छोड़ दिया. पढ़ लेना, टाइम मिले तो, ना पढ़ पाओ तो भी ठीक है. यहाँ तक आपकी ये न्यूज़ इज डन. ठीक है जी. Now here we go with the first question of the evening. Go and read out the question and then give me the answer. Shall I give a try? Chalo. The new UPI transaction limits effective from 15th of September 2025, person to merchant and person to person transactions effective, ठीक है. Per transaction UPI limit for capital market and insurance has raised to 5 lakhs, correct. Aggregate daily transaction limit has been fixed 10 lakhs for selected categories like travel, government, e-marketplace, true.
Credit card bill payments now have raised per transaction limit of 5 lakh rupees and 24-hour cumulative 6 lakhs. NPCI mandated all banks, PSPs, apps to implement these targets or these limits by 15th of September 2025. देखो जरा, मुझे तो इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा. Identify the correct statement. फर्स्ट क्यों गलत है भाई? फर्स्ट क्यों गलत है? फर्स्ट क्यों गलत है? मुझे तो ठीक लग रहा है. 15 सितंबर ही तो था, नहीं? Was it not 15 सितंबर? सर अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो what does it talk about? Sir, it talks about 15 September 2025. That is correct, but it is for person to merchant, not person to person. Person to person में तो कुछ changes हुए ही नहीं सर. Person to person तो as it is है. So keeping that in mind, answer is going to be B option. I hope समझ आया होगा, मजा आया होगा. Moving on to the next question और अगली न्यूज़. अगली न्यूज़ पे बढ़ने से पहले अगर मैं सबसे पहले आपसे पूछूं, how many of you have heard about AMFI? Can you give me the full form for AMFI? Can you guys give me the full form for AMFI? नहीं, चलो, I'll let you know. Please pay attention on the screen, guys. If I talk about AMFI, AMFI basically stands for what? So it stands for Association of Mutual Funds in India. So this Association of Mutual Funds in India, it is basically an apex industry body of SEBI registered asset management companies in India. It was established back in 1995 and its headquarters is in Mumbai, Maharashtra. Remember that its function is to promote investors' awareness and financial literacy. Second is it maintained professional standards as well as ethical practices in the mutual fund industry, and even policy advocacy and representation of asset management companies with regulators like SEBI is done by the same. आपने शायद वो सुना होगा म्यूचुअल फंड सही है. It's a campaign which was introduced by AMFI only, that is Association of Mutual Funds. So what is the news? So recently, during the 30th annual general meeting of AMFI, which was held in September 2025, there was change in leadership. If I talk about the new chairman, so the new chairman of AMFI is now Sandeep Sikka. Who is he? Sir, he is the CEO of Nippon Life India Asset Management Limited, and he has replaced whom? Sir, he has replaced Navneet Munot. Second is vice chairman is Vishal Kapoor, the CEO of Bandhan Asset Management Corporation, and he has replaced Anthony Haridia, who is the CEO of Mahindra Mutual Fund, Mahindra Manulife Mutual Fund. Got it? अब इस न्यूज में पूरी प्रोबेबिलिटी है कि ये जो न्यूज है इट कैन बी आस्क्ड इन फेज 1. यहाँ पे आपको दो नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संदीप सिक्का एंड विशाल कपूर. इफ यू गो डीप देन रिमेंबर these four names who has been replaced by whom. बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ और इसमें याद करने की पढ़ने की जरूरत नहीं है. मैंने कुछ इंफॉर्मेशन दी, आप रीड कर लेना जस्ट टू बिल्ड एन अंडरस्टैंडिंग फॉर यू, बट इसमें याद कुछ नहीं करना, याद बस इतना ही करना विच एवर आई हैव मार्क्ड फॉर यू. ठीक है जी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पॉइंट कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लीडरशिप चेंज. Both leaders, they are industry veterans with regulatory and market experience, so it will result in continuity and stability. Expected to work closely with SEBI, RBI and government to expand financial inclusion. Their focus areas is going to be boosting mutual fund penetration in rural India, promoting investor education and managing the risk and rising the global market volatility. So this is something important. Now let's try to figure out the answer. Sandeep Sikka, the CEO of Nippon Life Asset Management Limited, has been elected as the new chairperson of AMFI in September 2025. He succeeded Navneet Munot. Okay.
Vishal Kapoor, the CEO of Bandhan AMC, has been elected as vice chairman. The leadership change was announced during the 35th annual general meeting. AMFI was established back in 1995 with its headquarters in Mumbai. So, according to me, first statement is correct, second is correct, third is correct, but this is not the 35th annual general meeting. If I'm not wrong, it was the 30th annual general meeting. So this is wrong. AMFI was established back in 1995. That is correct. So answer is going to be A option. 1, 2, 3, 5 are the correct answers. Got it, guys? Is it clear? Moving on to the next news. अगली न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है और फिर से यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं और ये जो न्यूज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इट इज गोइंग टू गिव यू अ डेटा फॉर योर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग. तो डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में अगर आप यू आर एमिंग टू स्कोर एटलीस्ट 70%, अगर मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन एंड यू आर प्लानिंग टू स्कोर 7 मार्क्स और मे बी 70% ऑफ 15, दैट इज अराउंड 11 मार्क्स. फॉर दैट पर्पज you have to add facts and figures while writing a descriptive answer, and this is the right time. अगर अभी तक आपने facts, figures, data ना collect किया ना याद किया, it's okay. This is the right time to do it because you will be sitting in the examination in October or maybe in December, phase 1, phase 2. So in that particular context, whatever data you will be collecting September onwards is going to be fresh, it's going to be valuable in the month of December as well. इससे पहले का जो डेटा आप इग्नोर कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब सितंबर से इस डेटा को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिफोर आई मूव अहेड, गाइज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स? क्या समझ आता है द मोमेंट आई से माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम इट?
Oh, I'm really very sorry. I hope now I'm audible, guys. I hope now I'm audible. I'm so sorry. I'll explain it again. So sorry for that. So microfinance industry network. So microfinance industry network is something which we call it as self-regulatory organization, and this self-regulatory organization has been recognized by RBI. This organization has been recognized by RBI and it has been set up since 2009. This organization is the voice of microfinance institutes in the country and it has its headquarters in Gurugram, Haryana. It represents microfinance institutes at policy level. It ensures industry code of conduct, transparency and client protection, and it is, most importantly, it is responsible for publishing the micrometer report, and this micrometer report gives us or help us to track the status of microfinance in the economy, that how well the microfinance is being provided in the economy, how well the NBFCs, which we call them as microfinance institutes, they are performing, and what is the contribution of banks and the other regulated entities, banks and other regulated entities which are obviously involved in providing the microfinance. So let's get back and let's understand the criterias. So it was released by Microfinance Industry Network India, umbrella body of microfinance institutes. Date is September 2025 when it was introduced. And when it was introduced, it was introduced during the announcement, and that announcement was basically a presentation of the report. And this is the 54th edition of Micrometer, that is the industry performance report, which has been published. It has covered the data as of 30th of June 2025. That means first quarter of the financial year 2025-26. Again, very important, and this data will help you not only in phase 1, it will help you in phase 2 as well. ठीक है जी. अब इसमें क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है. सबसे पहला पॉइंट, asset under management. So if I talk about the total asset, if we talk about the total asset under management, so the total asset under management is 1,34,000 crore rupees. If I talk about the owned portfolios, it is around 1,11,000 crores, and managed portfolios around 22,000 crore rupees. If we talk about the growth trend, so it has decreased 16.4% in June 2024, and it was 5.4% versus March 2025 data. So it is on the decreasing trend. On the other side, if I talk about the client base, as of June 2025, 3.8 crore clients are being provided services by these microfinance institutes, which was earlier 4.5 crores. If we talk about the disbursements, total loan disbursed is 22,000 crores. Number of accounts is 41.5 lakh. Trend is again decreasing, 23.6% decrease in comparison to the last year data. Average loan per account is 54,000. Thus, this has increased by 16.5%, indicating fewer but larger loan. तो point क्या है, सब microfinance institute जो है, या जो microfinance institutes है, what is their total portfolio? अगर हम उनके total owned portfolio की बात करें, that is ओन्ड पोर्टफोलियो है 1,11,000 करोड़, और वो जो मैनेज कर रहे हैं पोर्टफोलियो वो कितना है, दैट इज 22,000 करोड़. तो अपना पैसा प्लस जो पैसा उन्होंने या किसी के बिहाफ पर मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो टोटल जो असेट मैनेजमेंट है, एसेट है जो अंडर मैनेजमेंट है, दैट इज 1,34,000 करोड़. इन दिस क्वार्टर इट हैज डिक्रीज्ड इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस क्वार्टर एज वेल एज लास्ट ईयर्स क्वार्टर. सेकंड पॉइंट इज क्लाइंट बेस, सर इट हैज आल्सो डिक्रीज्ड. Disbursement of loan, so the loan in terms of total value has decreased, but the average loan per account has increased, which means the loan number is decreasing, but yes, larger amount of loan is being provided by the microfinance institutes. Now, if I talk about the debt funding, total debt raised is 12,781 crore rupees. Sources, what are the sources of these debt for the microfinance institute? अब मान लो एक NBFC है, उसको लोन देना, and that NBFC is microfinance institute which is providing microfinance, that means microfinancing is done by this institute. अब इनके पास जो source of फंड्स है, वो source of funds डिपॉजिट तो होते नहीं है,
They cannot accept deposit, or they do not readily accept deposits like bank. So they have to raise the funds. So now they will be raising funds in terms of they will be borrowing the funds. So micro finance institutes, or for that matter NBFCs, for them the major source of fund is bank. वो बैंक से लोन लेते हैं, उसी पैसे को आगे लोन पर देकर एज अ कमीशन एजेंट काम करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं. सो द सोर्स ऑफ फंड सेज मेजॉरिटी source comes from banks, which is 81.9%. Non-bank entities, source of fund is 8.4%. All India financial institutes like NABARD, SEBI, it is 3.6%. External commercial borrowing, that means borrowing done from outside India, is 3.5 and other is 2.6. इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जिसको आपको मार्क करना होगा, दैट इज 81.9% बैंक्स. दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना होगा वो क्या, सर टोटल लोन दिया कितना, 22,000 करोड़, और उस टोटल लोन में से 22,000 करोड़ में से 12,000 करोड़ आपने क्या किया, बोरो किया. 12,000 करोड़ आपने क्या किया, बोरो किया. अगर 12,000 करोड़ बोरो किया, विच मीन्स 12 divided by 22, if you take in this manner, it comes out to be 6 by 11 into 100. इसको अगर मैं 9 मान लूं तो लगभग आप कह सकते हैं 55% of lending done by microfinance institutes in the country is the borrowings which they have made from the other institutes. क्लियर हो गया ये पॉइंट, याद रहेगा. क्लियर हो गया ये पॉइंट, याद रहेगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. इक्विटी पोजीशन की बात करें तो इक्विटी पोजीशन इज एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट की जो इक्विटी पोजीशन है दैट इज 34,582 करोड़, व्हिच हैज आल्सो डिक्लाइंड बिकॉज ऑफ द लो परफॉर्मेंस. अब अगला जो क्वेश्चन बनेगा, यहां से एक क्वेश्चन बनेगा जिस पॉइंट पे मैंने बहुत डिटेल में बात की है. दूसरा जो क्वेश्चन बन सकता है दैट कैन बी फ्रॉम दिस पॉइंट, टॉप स्टेट्स बाय पोर्टफोलियो आउटस्टैंडिंग. तो सबसे ज्यादा जो लोन दिया गया माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स द्वारा, दैट वाज इन बिहार on the first rank. On the second rank we have Tamil Nadu. On the third rank we have Uttar Pradesh. So remember the top three states. Remember the top three states. Remember the top three states in terms of microfinance lending. ठीक है जी. Is this point clear? Is this point clear? If this point is clear, just give me yes sir. अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. ठीक है. There is a doubt. उस डाउट पे भी आ जाता हूँ, लेकिन उस डाउट से पहले अगर आप नीचे जो रैंकिंग है उसे देखेंगे शायद आप कंफ्यूज ना हो जाए. हाँ अब ठीक है. तो अगली जो रैंकिंग है दैट इज रिलेटेड टू द एवरेज लोन पर अकाउंट. तो अगर आप एवरेज लोन पर अकाउंट देखेंगे देन तमिलनाडु इज ऑन द टॉप, वेस्ट बंगाल इज ऑन सेकंड एंड बिहार इज ऑन थर्ड. बट ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ loans or in terms of loan portfolio, that means value of loan given, so highest value of loan is given to Bihar till date by the microfinance institutes. So remember that name of the state, which is really very important. अब एक क्वेश्चन मेरे पास पूछा गया which is very important, वो ये है कि सर what is a difference between owned portfolio as well as managed portfolio? Before I give you the answer, anyone out there can give me the answer कि सर इनमें क्या डिफरेंस है. कभी आपने इसके बारे में पढ़ा हो, सुना हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. अदरवाइज आई विल give you the answer. I'm waiting for your reply, guys. No? Anyone? ठीक है, मैं बताता हूँ. See, asset under management का मतलब है it is the total value of asset that a financial institution like bank, NBFC or mutual funds they manage on the behalf of their customers. It includes both the assets they owned on its balance sheet as well as those it manages for others. For example, owned portfolio का क्या मतलब है? Sir, owned portfolio का मतलब है it is a part of your asset under management that the institution itself owns and carry on its own balance sheet. The credit risk also lies with the institution itself. That is known as owned portfolio. Managed portfolio का मतलब है it is the part of the asset under management that the institution manages on the behalf of others like investors or securitized pools and whatnot. So the assets which are originating by the institutions but the risk is transferred to the another party is known as managed portfolio. So this is a basic difference. ठीक है जी, क्लियर होगी बात.
समझ आ गया बेटा? ये जो अनिकेत मैंने आपको 22,000 करोड़ की वैल्यू बताई है, दैट इज द लोन विच हैज बीन गिवन इन दिस क्वार्टर, एंड दिस value which is now on your screen, it is basically the total outstanding, as it says, total outstanding of the microfinances or micro loans which have been given. So total outstanding micro loan सबसे ज्यादा कहाँ है? बिहार में, देन तमिलनाडु, देन यूपी। और अगर आप एवरेज पर अकाउंट के लोन वैल्यू की बात करें, दैट इज हाईएस्ट इन तमिलनाडु। क्लियर हो गया जी? डिकोड हो गया? ठीक है। बिहार डोमिनेट्स इन पोर्टफोलियो साइज, बट तमिलनाडु dominates in terms of higher loan value or average per borrower is high. This is something which you need to remember. MFIN के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये क्या है सर? एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, 2009 में सेटअप हुई, गुरुग्राम हरियाणा। पॉलिसी लेवल पे काम करती है, इंश्योर करती है इंडस्ट्री कोड ऑफ कंडक्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड क्लाइंट प्रोटेक्शन, एज वेल एज इट पब्लिश माइक्रोमीटर रिपोर्ट्स टू ट्रैक सेक्टर परफॉर्मेंस। क्लियर हो गई बात? दोबारा देख लो, एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। असेट अंडर मैनेजमेंट मींस, अगर मैं कहूं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स की, अगर मैं असेट की बात करूं, देयर ओन्ड असेट विच दे आर मैनेजिंग। द असेट क्या है? व्हेन यू प्रोवाइड लोन, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। जब आप लोन प्रोवाइड करते हैं एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, द लेंडिंग गिवन बाय अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इज अ पार्ट ऑफ इट्स असेट ओनली ना, दैट इज नोन एज इट्स असेट, इट्स ऑल्सो टर्म्ड एज फाइनेंशियल असेट। सो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स की जो असेट्स है which are owned, अपना पैसा, और ये है किसी और का पैसा जो आप मैनेज कर रहे हैं। तो जो आपकी ओन्ड असेट का पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो मतलब साइज, वो 1,11,000 करोड़ है, और मैनेज का जो साइज है पूरी कंट्री में जितने एमएफआईज हैं उसका है 22,000 करोड़ रुपए, जो कि पहले से कम हुआ है। क्लाइंट बेस टोटल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट पे पहले से कम हुए। इस क्वार्टर में जो लोन दिया गया वो इतना है, पर इंडिविजुअल जो लोन है या पर बोरोवर जो लोन वैल्यू है, दैट हैज इंक्रीज्ड इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर्स। इस बार जो 22,000 करोड़ का लोन दिया गया इस क्वार्टर में, उसमें से 12,000 करोड़ रुपए आपने आगे से बोरो किए, और उनमें भी मेजॉरिटी पैसा आपने कहां से बोरो किया है? यू हैव बोरोड द मेजॉरिटी फंड्स फ्रॉम द बैंक। ठीक। उसके अलावा हाईएस्ट आउटस्टैंडिंग माइक्रो लोन कौन सी स्टेट पे है? बिहार पे। और हाईएस्ट एवरेज लोन पर अकाउंट वैल्यू कौन सी स्टेट में इन केस ऑफ माइक्रो लोन्स? देन दैट इज तमिलनाडु। क्लियर हो गया? सिंपल है। अरे अब तो समझ आ गया, बहुत आसान भाषा में समझा दिया। इफ इट इज क्लियर गिव मी यस सर, इफ इट इज क्लियर गिव मी यस सर। चलिए, let's move on ahead and let's try to find out the answer for the next question. What does the next question says? So the next question says the asset under management of microfinance institute stood at 1,34,000 crore, showing 16.4% year on year decline. Yes sir, बिल्कुल ठीक है, year on year आपको decline हुआ है in terms of asset under management. Client base contracted to 3.8 crore, पहले 4.5 था, correct. Microfinance institutes have given a loan of 22,805 crores. That is absolutely correct. And the loan number or account number is 41.5 lakhs. Correct. The average loan per account in the financial year 2025-26 was 54,956, which reflects decline. No, sir, it reflects increase. It has increased around 16%. This is very important. तो ये गलत हो गया. लोन डिस्पर्समेंट इन क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2025-26 फेल बाय 23.6% कंपेयर टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर. दैट इज आल्सो ट्रू. सो आंसर बनेगा सर बी ऑप्शन. 1, 2, 3, 5 आर करेक्ट, बट द फोर्थ स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. समझ आई बात? क्लियर हुआ ये पॉइंट? इज इट क्लियर? इफ यू हैवंट लाइक द सेशन येट, क्विकली हिट द लाइक बटन गाइस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब आपने सुना होगा जरूर आरबीआई बुलेटिन के बारे में. You must have heard about it. And the moment you go for RBI bulletin में every month there are some articles which are presented, and these articles they are really very important. अब articles कैसे important है? सर दो ways में important है. पहला तो ये कि ये जो article का data है that can be asked in phase 1 directly or indirectly, but ये जो article से analysis है that is very important for phase 2. तो अभी तक मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था बुलेटिन पे, क्योंकि बुलेटिन का इम्पोर्टेंस हमेशा ये देखा गया एज पर माई एक्सपीरियंस कि जो लेटेस्ट बुलेटिन है
they are much important. तो latest bulletins much important है, तो we will be covering August bulletin in detail, we will be covering September bulletin in detail, we will be covering October bulletin, November bulletin in detail before you go for your phase 2 examination. मेरा टारगेट सिर्फ phase 1 नहीं है, मेरा टारगेट आपको phase 2 के लिए प्रिपेयर कराना भी है. तो ये जो सोर्स है इस आर्टिकल की, दैट इज फ्रॉम आरबीआई बुलेटिन, है क्या, मैं आपको ऊपर से पूरी बात समझा देता हूं. सर बेसिकली इट्स एन आर्टिकल विच टॉक्स अबाउट प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. सो प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया मतलब जो प्राइवेट कंपनीज हैं, they are investing in the country. Specifically I'm talking about the investment in the infrastructure, or specifically we talk about the investment in expansion of your company, or it can be an investment for setting up new company. So it is also a very important source of capital. It is also a very important source of capital in an economy, which results in development of infrastructure in the economy. We all know that government of India is making huge capital expense, and that capital expense is increasing on regular basis. If we check it from past 3-4 years, if we see the trend of past 3-4 years, and this increase in capital investment is resulting in rapid expansion or development of infrastructure, and this rapid development of infrastructure is providing more scope, more window to the private players so that they can invest in the same direction. What I'm trying to say, let's suppose guys, government ने Delhi to Mumbai एक नया highway construct किया. Already एक highway था. Now there is a new highway which has been constructed, and obviously the areas close to these highways, they will develop again, and develop in the sense now their accessibility to Delhi has increased, their accessibility to Mumbai has increased, as well as there are new business venues which have opened up for them. So keeping all these scenarios in time, there will be a huge development in the surrounding of this Delhi Mumbai new highway which has been constructed, and this new investment will not be done by the government. Government ने तो road बनाई, अपना काम कर दिया. अब this investment will be done by the private players, and we are focusing on this private investment, and specifically we are talking about the private corporate investment, private companies investments. Got it? Now, private corporate investment is one of the main drivers of India's long-term growth. Investment cycle is recovering from the pandemic disruptions, which was supported by strong GDP of the economy. Then disinflation, lower inflation allows accommodative monetary policy, which means lower repo rates, which means easy availability of credit at a low rate of interest, which is helping the private investors or the private corporates to borrow and invest for the purpose of expansion. RBI rate cut has been witnessed, and the value of rate cut is 100 basis points since February. Balance sheet repair of corporates due to the higher profitability in the past. Balance sheet of the corporates have improved. Banking sector has improved with lower NPAs, more liquidity and more capacity to provide loan, as well as government's policy push, which include production linked incentive schemes, digital infrastructure, energy transition. So these are some of the reasons. These are some of the reasons which are responsible behind this private corporate investment increase. What value has increased? Why it has increased? Let's try to decode it. Overall, project sanctioned by banks and financial institutes was 3.68 lakh crore rupees in the financial year 2024-25, which has decreased in comparison to 3.91 lakh crores in 2023-24. Now you must be wondering, keep projects sanctioned by banks. Remember, we have discussed a circular by RBI, that is project finance, और उसमें मैंने आपको बताया था, whenever there are huge projects and if you're looking forward for a loan, if you're looking forward for lending or loan for this particular project, then there is a master direction which is given by RBI which you have to follow. We call it as a project finance. तो लगभग इस बार जो banks ने project finance sanctions किए थे, that was 3.68 lakh, which has dropped down from the previous year. Total investment plans
If I talk about all the investments done by the banks, borrowings done from the foreign nations, as well as the investment done by the equity players, the investment done by the owners. So the total value of investment is 4.97 lakh crores, which was 5.47 lakh crores in the previous year. Okay? So these are two important data numbers which you need to remember. Second point is financing channels. If someone asks you in the project finance in India, majority financing channels are, so the majority financing channel or the major source of project funding comes from banks or financial institutes. If you can see, out of 5 lakh crores, around 3.7 lakh crore, that means around 72% is coming alone from bank and financial institutes. So this point is very important, which you need to remember. Along with that, if we talk about the equity issuance, so equity issuance is around 8%, and the total value of projects for the financial year 2024-25 was 4.97 lakh crores as per the data. तो इसमें आपको बस एक ही पॉइंट याद रखना है, टोटल प्रोजेक्ट्स फंडेड बाय प्राइवेट कॉर्पोरेट्स 4,97,000 करोड़, और उसमें से जो सोर्स ऑफ फंड है, जो कि इन्वेस्ट होगा पैसा, जिससे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, जिससे प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट होगा, वो सारी चीजें, पैसा क्या है, सोर्स ऑफ फंड क्या है, सर दैट इज बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। अब आप सोच रहे हैं कि ये तो गलत है, गलत क्यों है? बैंक का काम है लोन देना, मेरा काम है एक्सपेंशन करना ताकि मैं और प्रॉफिट कमा सकूं। तो मैंने लोन लिया, एक्सपेंशन किया, प्रॉफिट कमाऊंगा, लोन वापस कर दूंगा, सो दोनों का घर सही चल रहा है। सो दिस इज अराउंड 72%. दिस इज समथिंग विच यू नीड टू रिमेंबर. सो द मेजर सोर्स फॉर प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स is bank and financial institutes, around 70%. If I talk about the next point, size wise distribution, तो मेगा प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें, आउट ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट्स 25.8% शेयर ऑफ कॉस्ट, नॉट नंबर, टोटल कॉस्ट का लगभग 25% हिस्सा मेगा प्रोजेक्ट्स को गया, जिसमें प्रोजेक्ट वैल्यू या प्रोजेक्ट कॉस्ट 5 करोड़ से ज्यादा है। और अगर मैं लार्ज प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो यहां पर जो कॉस्ट शेयर हुआ है दैट इज 37.2 करोड़, और अगर मैं इसे और कैलकुलेट करूं तो इट कम्स आउट टू बी अराउंड 63%। गाइस एक बार चेक कर लेना, माय मैथमेटिक्स, आई थिंक इट्स फाइन। तो लगभग 63% का जो लोन है या 63% का जो इन्वेस्टमेंट है बाय द प्राइवेट कॉर्पोरेट्स, इट्स डन इन द लार्ज एंड मेगा प्रोजेक्ट्स, एंड इट इज डन इन द प्रोजेक्ट्स वर्थ मोर देन 1000 करोड़ रुपीस। ठीक है, अगर हम बात करें पर्पस वाइज, हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट इज डन फॉर द ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स, दैट मीन्स फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स, विच इज वेरी गुड, especially for emerging economies like India. If the greenfield projects are increasing, which means new projects are set up from scratch, this is enhancing the employment opportunity in the country. This is increasing the production capacity of the country and whatnot. So capacity expansion and gross fixed capital formation is witnessed. If I talk about the industry wise trend, sir, infrastructure sector has recorded the highest investment, 50.6% of the total share, और उसमें भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी जो डोमिनेटिंग सेक्टर है दैट इज पावर, एंड आफ्टर पावर वी हैव रोड्स एंड ब्रिजेस। ये 50.6%, यू मस्ट बी फीलिंग दैट इट्स अ वेरी हैवी नंबर, बट दिस परसेंटेज इज लोएस्ट इन लास्ट 10 years, विच यू नीड टू रिमेंबर। अगला पॉइंट जहां से क्वेश्चन बनेगा दैट इज स्टेट वाइज लीडर्स। अगर हम स्टेट वाइज लीडर्स की बात करें, टॉप 5 स्टेट्स दे अकाउंट फॉर 60% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। हाईएस्ट प्रोजेक्ट or highest cost of projects are being set up in Gujarat, then Maharashtra, then Andhra Pradesh, then Rajasthan. Here you can see the trend, but out of the total project cost, 21.4% cost is invested in the projects for Gujarat alone. In the projects for Gujarat alone. तो एक पॉइंट याद रखिएगा, इस साल 25-26 का प्रोजेक्शन है 2.67 लाख करोड़ का। I'm talking about pipeline capital expenditure, and pipeline capital expenditure last year was 2.20 lakh crore. Pipeline का मतलब कि सर जो प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो चुके हैं लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुए, इस साल भी उन प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट होगी, दैट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ पाइपलाइन कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, these are some of the important terms which you can read. Now let's try to solve a question. Consider the following statement. In 2024-25, 907 projects worth 3.68 lakh crores were sanctioned by banks and financial institutes. That is true. Greenfield projects hold the majority
that is true. Infrastructure sector 50.6%, power leading, true. In phasing profile, 39.3 of planned expenditure was spent in 2024-25 and 35.2% in 2025-26, and then we have a term that is beyond that. ये पॉइंट मैंने इंटेंशनली कवर नहीं किया अपने कंटेंट में, बट मैं आपको बस आइडिया दे रहा हूँ ये क्या है. फेजिंग प्रोफाइल का मतलब कि जो 39.3% है किसका, प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर का, वो तो स्पेंड हुआ 2024-25 में. 35 पॉइंट होगा 25-26 में, और बाकी का जो प्लान है वो स्पेंड होगा 25-24 में, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं they have long gestation period. That means they have long period to complete the project. It generally take 10 to 15 years to complete the project. Project भले 2024-25 में start हुआ, but it won't be witnessing the entire investment in 1 year alone. It's a long term process. So that is the reason कि जो plan किया उसका लगभग 39.3% आपने उस year में invest किया, rest in the next year or next in the upcoming years to go. Total capital expenditure through all the channels is expected to rise 3.67 lakh crores in the financial year 2025-26. So this point is incorrect. अगर आप ध्यान से देखें तो pipeline expenditure जो है that is 2.67 lakh crores. It's not 3.7 lakh crores. तो आंसर क्या बनेगा? B option 1, 2, 3, 4 are the correct answers. Clear हो गई बात? समझ आ गया? अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, else we will conclude the discussion. If you have any doubt, you may ask please, else we are going to conclude the discussion. These were some of the important news for the day. And I'm pretty sure each and every news which I have discussed with you is crystal clear. कोई doubt नहीं होगा. चलिए. Now here comes the time जब मैं आपको आपके homework questions दूंगा, and I'm expecting that you all will be going through with these homework questions and you will be submitting your answers in the comment section. Before that, I have a very important news to share, guys. We have started with a cutoff cracker batch for RBI Grade B examination. If you want to prepare live and you want to clear this examination the very first attempt, this is the right time to start your preparation. The batch is live. Go. The link for this batch is available in the description below. And before enrolling yourself, use code MADHAV in order to enjoy maximum discount. Here we go with the homework questions, guys. Start taking the screenshots. As you all know, I will be giving you 10 seconds for every question so that you can take the screenshots. Here we go with the last question. So you have 4 questions जो आपको पढ़ने, आंसर देना, and share your answers in the comment section. I will be commenting on the correct answers. Try कि अगर 20 से ज़्यादा comment होंगे then I will be sharing the correct answers in the comment section itself. Otherwise इसके correct answers आपको अगली क्लास में मिलेंगे. Thank you so much for joining, guys. Good luck. God bless you all. See you soon. अब एक भी मिनट अपना वेस्ट मत करो. The time has come. Give your 100% to clear this examination in the very first attempt. Good luck. Bye-bye. Take care. See you soon.